यार वो मैं ये बच्चे म्यूचुअल फंड्स ने और ये वजह से इन्ना बारे समझने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने भी नहीं आती कि चंगी तरह मैंने भी इन्ना बहुत चंगी तरह पता नहीं मैं पढ़ी नहीं कल इस बारे। चलो मेरी क्लास स्टार्ट होगी। Hello Anchal, how are you? Rohini is not coming? Why? Oh, okay. चलो ठीक है, विल स्टार्ट। डिस्कशन फिर कर लें आज या फिर वी शुड पोस्टपोन इट? Are you having classes in the next month in September? Anchal, are you having classes in the next month? No, here, with me. It's like you must be having exams from 20th of September. So, till 20th, will you be having some classes? Okay. Yeah, I was hoping ki if I could get 4-5 classes, then I'll be able to complete center of mass. And the very important topic is collision, which will come in school, so that I will be able to complete. Okay. So I guess we'll discuss the given homework. We have some homework from Work Partnergy as well. Is it? I guess from exercise 4, we need to discuss from Work Partnergy. Yes? Okay. And did we discuss vertical circular motion from worksheet 1 and 3? Okay. So we are pending with exercise 4 only, right? Okay. So next class, do revise that exercise. Yeah. Means before coming to class, revise that exercise so that we can discuss, because you may forget the doubts by that time. But we can discuss center of mass, right? Because we are already solving it. How many questions did I give you? Center of mass, worksheet 1. 1 to 13, I guess. Okay. 1 to 5, any doubt? Question number 1 to 5. 1 to 5 बेटा कोई डाउट है? अच्छा, वी ऑलरेडी डिस्कस 1 to 13 को हमने सारे कर लिए डिस्कस। चलो ठीक है, then let us come to this question. We solved this one in the class, right? And I told you to solve this at home. Yes? Are you getting the answer? Did I tell you the answer? So are you getting that? Or shall I explain? चलो एक बार देख लेते हैं. So this trolley and this boy of mass m both are moving with velocity v naught. So we already have momentum of the system, initial momentum of the system, right? Now initial momentum of the system will be m plus m into v naught. सारी कहानी सेम है यहाँ पे. The momentum of the system will be conserved in the horizontal direction. Why? Because when the boy is going to jump, right? So there is no external force in the horizontal direction.
but in the y-axis there is some external force in the y-axis. Yes, so that is why we can conserve momentum only in x-axis, not in y-axis. Because when the boy will jump, so when the boy will jump, let us say he jumps with velocity v1 with respect to ground, and trolley moves with velocity v2 with respect to ground. Yeah. So when the boy jumps, then he will apply some force on the trolley, but that will be an internal force. But so that is how we can conserve the momentum in the x-axis. But in the y-axis, since there is gravitational force, we won't be able to conserve the momentum. Now this is the initial momentum. Final momentum will be capital M into V2, right? Minus M into V1, because that velocity is in the opposite direction. So this will be the one equation that we will get from the conservation of momentum. Another thing is student jumps with velocity U with respect to trolley. Now student jumps with respect to trolley. So this is the velocity of student V1 this side. So since we have to find with respect to trolley, so let us bring the trolley at rest. So trolley will be at rest now, and we will give this boy also velocity v2. So relative velocity of boy with respect to trolley will be v1 plus v2, and that is given as u, right? So there are two variables, u and v naught. Both are known, masses are given, only v1 and v2 are unknown. So on simplifying, we will get the value of v as v2 as small m plus capital M v naught plus mu divided by small m plus capital M. क्लियर बेटा? ये इसमें कोई डाउट है तो पूछो. ओके, आपका आया था घर पे ये वाला आंसर? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. v नॉट प्लस v1, नहीं बेटा, फाइनल वेलोसिटीज लेनी है. आई गेस इट इज क्लियर व्हाई इट वॉन्ट बी v नॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. देखिए, दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगेन देयर इज अ trolley of mass m, and there is a student of mass small m. Yeah, so he is standing on the trolley. Student is standing on the trolley. Now question is, if let me write, if the student walks on trolley with velocity v naught with respect to trolley, then find the velocity so देखो, as the student will walk towards right, as the student walks towards right, then obviously the trolley is going to move in the backward direction, right? Obviously there will be some friction force between the boy and the trolley, otherwise he won't be able to walk. Yeah, so you need to find when the boy walks with velocity v naught, mind it, this is velocity with respect to trolley. So you need to find what will be the velocity of the trolley. करो फटाफट बेटा. इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं.
Done. Minus mv naught divided by m plus 1. Very good. So you must have applied the same equation, right? Let me write the quick solution. So this will be mv1 plus m into minus v2. Considering this velocity v2, okay, you must have taken here positive, right? Obviously it will come out to be negative, minus mv1 by capital M. Yeah, assuming the student walks with v1. Now it must be clear, the friction force on the buoy will act in the forward direction, on the trolley will act in the backward direction. That is why trolley will move in backward direction, buoy will move in forward direction. And since that will be the internal force of this system, so hence the buoy, momentum can be conserved in the x-axis because this becomes the internal force. Magnitudes are same, and other v1 plus v2, that must be v0. Clear है बेटा ये? Okay. Yes, yes. Because V2, this is the answer for V2, right? And V2 we have already assumed with respect to ground. Yeah, this is with respect to ground, definitely. Because V1 and V2 we are considering with respect to ground. One more thing, why we are having with respect to ground? Does it mean कि we can conserve momentum with respect to ground? Yes, because you cannot conserve momentum with respect to trolley. Why? तब तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों फोर्स विल बिकम इंटरनल फोर्स, right? So that is why we are solving with respect to ground. And the until unless mentioned, if it is say like in this question it is given find velocity of trolley, until mentioned, then it is always with respect to ground, right? So two reasons, not mentioned then with respect to ground only, and you can conserve with respect to ground only. Yeah, because then only friction force will become internal force. Clear? Second, this is a bomb of mass m which explodes into two pieces, m by 3 and 2m by 3. Speed of m by 3 is v naught. Find the final speed of other part. Yes, minus v naught by 2 means in whichever direction m by 3 moves, 2m by 3 will move in the opposite direction. Now solve this one, bacha. This is a mass of 4 kg, which is initially at origin. It explodes into three pieces. 1 kg goes in y-axis with 4 meter per second. 1 kg goes in x-axis with 3 meter per second. So you need to find speed and direction in which third part will move.
Yes, good. So you can also find the direction, right? Since we already have the vector, so we can also find the angle, that at which angle it will move, है ना? एक मिनट बच्चे, 53 डिग्री नाउ. अच्छा, एक इसमें एक ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. Obviously the resultant momentum will be in this direction of these two particles, right? So hence the momentum of the remaining part has to be in the opposite direction so that net momentum remain conserved. Yeah, there will be no component in that axis, and momentum of the third particle has to be in the opposite direction so that net momentum of the system remains zero. So we'll quickly write. So Pi is equal to Pf. Momentum is conserved of the system. Now initial momentum is zero, final momentum. Let us say this is in x-axis, right? So in x-axis, final momentum will be 1 into 3 plus 1 into 0 because it has no component in x-axis, plus the remaining part is 2 kg that we have to find, 2 into x. Yeah, so it will be x is equal to minus 3 by 2 meter per second. Similarly we can find for 0, find for y-axis. Y-axis में भी initial momentum 0 है, so that will be 1 into 0. पहले particle का 0, क्योंकि there is no component of particle A in y-axis. Similarly दूसरे का आ जाएगा 1 into 4 plus तीसरे का आ जाएगा आपका 2 into y. तो y आ जाएगा आपका minus 4 by 2 meter per second. So you can see your answer will be final momentum. This is the velocity of the third part. So velocity of third part will be minus 3 plus 4 divided by 2 meter per second. Correct. Now ये वाला 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों. Body of mass 30 kg, shot with velocity 50 meter per second at an angle of 53 degree. तो टॉप पॉइंट पे जाके this splits. So अच्छा ये बताओ, तो obviously this is going to follow a projectile path. Can you conserve momentum in x-axis? यहाँ पे टॉप पॉइंट की बात हो रही है. कैन यू कंजर्व मोमेंटम इन एक्स एक्सिस? यस, देयर इज नो फोर्स. कैन यू कंजर्व मोमेंटम इन वाई एक्सिस? नो, बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशन फोर्स. गुड, चलिए सॉल्व कीजिए.
यस वेरी गुड 120 गुड। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है दिस इज ऑफ 30 kg, सो इट स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स ईच ऑफ मास 10 kg। तो देखिए बच्चे, एक तो यहाँ पे जो 10 kg वाला मास है विच हैज कम टू रेस्ट, इट विल फॉल डाउन वर्टिकली, रेस्ट पे आ गया तो व्हाट विल हैपन टू इट, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन वर्टिकली। Another part, it retraces its path. It means it is having 30 meter per second velocity in this direction, the entire mass. Then the 10 kg mass will retrace its path only when it is having the velocity 30 meter per second in the opposite direction. Which one? The 10 kg mass. Yes, and 10 kg will fall down and another 10 kg will move this side. Right? So obviously this will retrace its path. It has nothing to do with its mass, as we have learned in projectile, depends only on the velocity. So it will retrace its path, come back to origin. Now this third mass, it will be, we can conserve the momentum. So m into v cos 53, and momentum can be conserved in x-axis only. So will be equal to 10 kg into 0. एक का तो vertically downward चला जाएगा, initial velocity हो जाएगी उसकी 0. So final velocity after explosion will be 0 at that instant, plus this will be 10 into minus 30 plus 10 into v जो कि हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना आपका 30 into 30 is equal to minus 300 plus 10 into v, तो v आ जाएगा आपका 120 मीटर पर सेकेंड। सो दिस 10 kg weight will move with 120 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, क्या ये बॉडी जैसे इनिशियली इफ द बॉडी वुड नॉट एक्सप्लोड देन इट विल लैंड इट्स लेट अस से एट दिस पॉइंट ए, जैसे कि प्रोजेक्टाइल लैंड करता, बट नाउ टेल मी वेदर दिस पॉइंट, दिस 10 kg मास विच गॉट इट्स वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड, विल इट लैंड एट ए और विल इट लैंड बिहाइंड ए और विल इट लैंड अहेड ऑफ ए? बताओ कहां पे लैंड करेगा? ए के पीछे लैंड करेगा, आगे लैंड करेगा, ए के ऊपर ही लैंड करेगा? दिस 10 kg मास बिहाइंड क्यों गिरेगा? इसके पास बेटा वेलोसिटी आ गई 120, अगर 30 होती तो 30 के हिसाब से कहां पे गिरता, देखो यहीं पे आता। वाई? बिकॉज जो एक्स कोऑर्डिनेट जितना ये आगे जाता, दिस डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस वुड हैव बीन ux इनटू टाइम। अब देखो टाइम तो हर केस में सेम रहेगा बिकॉज इट इज फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, राइट। बट अगर इसकी वेलोसिटी 30 रहती तो ये इसी ए पॉइंट पे आता, 30 से अगर कम हो जाती ए पॉइंट से पीछे रहता, एक्स कम हो जाता। अगर 30 से ज्यादा है अब तो कहां पे गिरेगा? आगे गिरेगा। कितना आगे गिरेगा? अगर ये x होगा तो भी ये 4x पे जाके गिरेगा। समझ में आ रहा है? इट विल फॉल एट 4x। ठीक है बच्चे? एनीवे इट कैन नॉट। अच्छा एक हमने और क्या पढ़ा था, हमने एक डेरिवेशन की थी कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, राइट। सो सेंटर ऑफ मास अपना उसी स्पीड से मूव करता रहेगा इफ इट इज हैविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो इट कैन नॉट इम्पैक्ट द सेंटर ऑफ मास। अब इस केस में ये बताओ व्हाट विल बी if I am asked what will be the nature of path followed by the center of mass. Center of mass will continue to fly on this initial parabolic path and the center of mass, that imaginary point, will land at point A only. Why? Because due to explosion all the forces will be internal forces, only there would be gravitational force. वो पहले भी लग रहा था अभी भी लग रहा है, right? So center of mass के पाथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, it will land at point A. Because of the explosion all the forces will be internal forces, center mass पे इसलिए कोई impact नहीं आएगा। So center of mass will land at A and it will continue to follow the parabolic path which was started by the particle. Is it clear? ये क्लियर हुआ बेटा? सेंटर मास विल फॉल एट A। तो ये इसमें आप मेंशन कर लेना, ये पॉइंट मेरे को मेनली मेंशन करना था। सेंटर मास विल कंटिन्यू टू फॉलो द इनिशियल पैराबोलिक पाथ एंड इट विल लैंड एट पॉइंट A only. Because due to explosion all the forces are internal forces. There is no change in external force, as there is no change in external force.
Done? Okay. चलो एक क्वेश्चन और लिखो. These are two blocks, each of mass m. Two blocks, each of mass m, are connected by a spring. This spring is initially compressed and the blocks are held by a string. So अभी क्वेश्चन क्या है कि these are two blocks A and B, right? Connected by a spring and a string. So basically ये string क्या कर रही है? We have compressed the spring and tied the blocks by a string. Obviously, if we do not tie the string, then spring will push the blocks in the opposite sides, right? Surface is smooth. Now, find velocities of blocks. अच्छा बच्चों, ये जो ब्लॉक्स हैं दे आर नॉट कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, राइट? स्प्रिंग के साथ अभी बस एक टच में है, बट इनके साथ रिजिडली कनेक्टेड नहीं है. फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स व्हेन दे लीव द स्प्रिंग इफ स्ट्रिंग इज कट. अगर हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया, इनिशियल कंप्रेशन इनमें एक्स नोट मान लीजिए स्प्रिंग में, और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लीजिए. सो व्हेन द this string is cut immediately, then what will happen? Spring will push the blocks further, right? So this will move in this direction, this will move in this direction. So you need to find the velocities of the block when they leave the spring if the string is cut at an instant. क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? अच्छा, ये एक काम करो, ये m1 m2 मान लो. हो जाएगा आंसर, ये बताऊं? देखो, इसमें दो इक्वेशन लगेंगी. Obviously, you will have V1 and V2. So you to solve for V1 and V2, you require two equations. I just want the equations.
Done. सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, वो वैल्यूज गिवन होंगी तो वी कैन सॉल्व. के एक्स नॉट स्क्वायर बाय, बेटा आपकी तो यूनिट्स ही सही नहीं है इसमें. देखो ये आ रहा है आपका जूल बाय जूल पर केजी, यूनिट्स ही आपकी सही नहीं आ रही. देखो लेट मी शो यू. देखो यहाँ पे वन थिंग इज क्लियर. व्हेन यू विल कट द string, then what will happen, the springs will push the block in the opposite direction, right? So let us assume blocks leave the contact and this block moves with v1, spring will be somewhere here, and this block leaves the contact with speed v2. Since there is no external force on the system, there is no friction from the ground, there is nothing else in the x-axis, so we can conserve the momentum in x-axis. Initial momentum was 0, so it is m1 into minus v1 plus m2 into v2. So m1 v1 is equal to m2 v2. This is our first equation. अब दूसरी इक्वेशन देखो कहां से आएगी. Since there is no external force on the system except gravity and normal reaction, whose work done will remain 0, so energy of the system will be conserved. Initial potential energy बताओ सिस्टम की क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. फाइनली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, प्लस ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इज इक्वल टू दिस. सो हाफ k x naught square is equal to 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square. So this will be the second equation for this. Clear है बेटा? इन दोनों से we can solve for it. Okay? Okay. नोट कर लिया आपने? Okay then. Let us solve another problem. या पहले डायग्राम बनाएंगे अच्छे से. I'll solve this problem, then we'll give you some other question. Two blocks are connected by ideal spring, right? So initially the spring is at natural length. Okay. One block is given initial velocity v naught as shown in figure. Find the maximum elongation in the spring. देखो बच्चे क्या होगा, when we give this block velocity v naught, so spring extend होना शुरू होगा, but at that time this block will also be coming towards this. So ये elongate कर रहा होगा, ये compress कर रहा होगा. You need to find the maximum elongation in the spring. So I'll explain this problem. First make the diagram and write the statement. Done? Okay.
So let us see how do we approach this problem. Now what will happen when the block B will start moving? Spring is going to elongate, right? So when the spring elongates, as the spring elongates, it will apply some backward force on the block B. At the same time, it will apply the same force in the forward direction on block A. So it is going to deaccelerate block B and it is going to accelerate block A, right? So velocity of block B will decrease, but velocity of A will increase. But initially, obviously, when the velocity of B decreases and velocity of A increases, velocity of B will still be more than velocity of A. Yes, initially velocity of block B से पहले ही हमने इसको velocity दे दी 50 मीटर per second. So at that moment t is equal to 0 पे इसकी velocity है 50, इसकी velocity है 0. So धीरे धीरे क्या होगा, ये 50 से 45 आएगी और अभी ये कितने पे आ जाएगी, से ये 5 पे आ गया. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, डिपेंड्स. ये मान लीजिए 40 पे आया तो ये आपका 10 पे आ जाएगा. इस तरह से इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, ए ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी. बट इनिशियली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इट विल स्टिल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ बी, राइट? सो जितना बी आगे जा रहा है ए उतना तो आगे आएगा नहीं. इसका मतलब क्या होगा, टिल द टाइम वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ ए, ओवरऑल द स्प्रिंग विल इलोंगेट. ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? आंसर ये समझ में आया आपको? इनिशियली ब्लॉक बी की वेलोसिटी ज्यादा है ब्लॉक ए से, सो ओवरऑल क्या होगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा. सो दिस इलोंगेशन विल कंटिन्यू टू हैपन until unless, so there will come a point when velocity of B, there will come a point when velocity of B will become equal to velocity of A. So initially what happens, I am repeating again. So at this point velocity of B at any moment, say VB dash, this is VA dash, right? So VB dash will decrease, VA dash will increase, but this will be more, VB dash will be more than VA dash, right? So spring will keep on elongating. So at velocity of B will keep on decreasing and of A it will keep on increasing. So they will achieve a moment when both the velocities become equal. Now what will happen? Spring will be elongating. So force on A will be more. So what will happen? Velocity of B will decrease further because obviously B पे जो force है वो पीछे की तरफ है. And what will happen? A पे जो velocity होगी वो क्या है, उसकी velocity further increase होगी. अब इस moment के बाद बताओ, velocity of A is more than velocity of B now. So what will happen? Spring will start to compress again. Yeah? ये समझ में आया? इस जब velocity equal हो जाएगी, after that velocity of A will become more. So now the spring will start getting compressed again. So इसका मतलब when both the blocks will have same velocities, at that moment spring will be at maximum extension, right? So at this condition spring will be at maximum extension. Right? So we have found our condition where the maximum extension will be. But before that, let us analyze. So अभी फिर दोबारा क्या होगा, VB की velocity कम होती जाएगी, A की velocity बढ़ती जाएगी. Obviously अब now velocity of A is more than velocity of B. So there will come a point when the velocity of B will become 0. Now the entire velocity will be transferred to velocity of A. पहले spring elongate होता गया, right? Maximum elongation पे आ गया. After that, velocity of A becomes more than velocity of B. So now spring will start compressing again. And सारी velocity B की कम होती जाएगी, A की बढ़ती जाएगी. So होगा क्या? Spring will again come at its natural length. And जो पहले V के पास velocity थी V naught, वो सारी की सारी अब किसको मिल जाएगी? A को मिल जाएगी V naught. And B की velocity क्या हो जाएगी? 0. Again the same sequence will start. फिर A की velocity दोबारा कम होनी शुरू होगी, B की बढ़नी शुरू होगी, and so on. It will continue to move on with this process. बच्चे क्लियर है यहां तक? Okay, so we can apply the conservation of momentum and energy conservation. Since there is no force in the x-axis, so momentum will be conserved. Initial momentum देखो कितना था? This velocity इस A block की velocity 0 थी, इसका momentum 0, इसकी velocity v naught थी. So initial momentum is mv naught plus m into 0. Final momentum क्या है? Both the blocks are having same velocity in the same direction, so it will be mv plus mv. So from here we find v is equal to v naught by 2.
right? But we need to find the extension. So second equation. Since the energy will be conserved as the work done by gravity and normal reaction will be zero. So initial kinetic energy इतनी थी हाफ एम बी नॉट स्क्वायर. दूसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो. स्प्रिंग नेचुरल पे था तो इसलिए स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो. एंड जो आपका नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², राइट. तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 mv². कितनी बन जाएगी ये 1/2 2m इंटू v². v की वैल्यू क्या है v0/2, वो पुट कर दी हमने. x की वैल्यू आ गई हमारे पास m रूट स्क्वायर रूट ऑफ m/2 के इंटू v0. क्लियर है बेटा ये. ओके, नोट कर लीजिए इसको. डन. ओके, तो इसी का भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला. सो टू ब्लॉक्स, सारी सिचुएशन सेम है. इनिशियली द स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, राइट. स्प्रिंग कांस्टेंट आप के मान लीजिए. और initially the blocks are given these velocities. Now find the maximum maximum elongation in the spring. Yes, Anshul, can you hear me now? Did you get the question? You have to find the maximum elongation. Spring is at natural length, right? Spring constant is K. Find the maximum elongation. Watch it. Masses are given m and 2m.
Done. Done. No. Why? देखो कंडीशन सेम लगेगी बच्चे। देख, अगर यहाँ पे दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो अगर बराबर होती, देन दैट वुड हैव बीन द केस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। अभी यहाँ पे एक को v नॉट दे दी, दूसरे को 2v नॉट दे दी, सो ऑब्वियसली एक की वेलोसिटी कम है, दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा है, सो ये ज्यादा एक्सटेंड करेगा, दोनों पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो फर्स्ट दिस बॉडी विल कम टू रेस्ट, बट दिस विल बी स्टिल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फिर क्या होगा, स्मॉल m, दिस बॉडी m, it will again experience a force in the right direction, so it will start moving in the right direction. Then its velocity will further decrease until again the fourth same condition, that is both start moving with the same velocity. समझ में आया? दोनों की पहले डिक्रीज होगी, बट पहले m जल्दी रेस्ट पे आ जाएगा बिकॉज इट हैज स्मॉलर वेलोसिटी, एंड 2m अभी भी मूव कर रहा होगा, राइट? Till that point, spring will be elongating. Even after that, when left hand block comes to rest, still the block, right hand block will be moving, right? So left hand block will also get velocity in the right hand side, and right hand side block की velocity जो होगी वो और कम होगी, and ultimately spring will be elongating then also, and it will stop elongating when both the velocities will become equal. Can you imagine that? I'll explain again, just solve for that moment. बच्चे डन? X is equal to 2v root n by k. Let me check. 2v root n by k? No, it's root 6n by k. कोई नहीं, हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, अच्छा ये तो कंडीशन आपको पहले समझ में आ गई कि when both the blocks will move, both velocity of both the blocks will decrease, right? So but first this will come to rest, and at that moment
ये मान लीजिए रेस्ट पे आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0 एंड एट दैट मोमेंट जो ये 2m होगा इट विल स्टिल बी मूविंग विद सम वेलोसिटी v डैश, राइट। सो अभी भी क्या होगा, स्प्रिंग अभी भी एक्सटेंड होगा। अब नाउ दिस ब्लॉक विल इट्स वेलोसिटी विल फर्दर रिड्यूस एंड इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट एक मोमेंट के लिए क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी विल स्टिल बी 0। अब ये वाला जो केस है ये पीछे वाला ही केस हो जाएगा, है ना। सो व्हेन द बोथ ब्लॉक्स विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन स्प्रिंग विल बी एट मैक्सिमम एक्सटेंशन। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखिए क्या लिखेंगे, m इंटू माइनस वी नॉट प्लस 2m इंटू माइनस 2v नॉट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, mv प्लस mv। क्लियर बेटा ये, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं 3m v नॉट इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ये 2 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 3mv। तो v आपका कितना आ गया, v नॉट के बराबर आ गया, ये ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1/2 m v नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 2m इंटू 4v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2m इंटू v स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। कौन सी वेलोसिटी, अच्छा नहीं सॉरी ये आपकी पॉजिटिव आएगी बेटा, ठीक है ये पॉजिटिव आएगी, सॉरी दिस विल बी अभी, ठीक है। तो ये वही बनेगा, आंसर देखो सही है मेरा तो 3mv नॉट इज इक्वल टू 3mv, तो ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखो mm यहाँ पे ये आ गया अपने पास, तो दिस इज हाफ mv नॉट स्क्वायर, दिस इज 8mv नॉट स्क्वायर बाय 2, राइट। सो दिस विल बी 9mv नॉट स्क्वायर by 2 is equal to this v is also equal to v naught, so इसको इधर ले जाते हैं, minus 2mv naught square by 2 is equal to half kx square, ठीक है। तो ये कितना बचा आपका, अरे यार यहाँ पे आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि m plus 2m 3m आएगा ना, so this will be 3m, right। so this will be 6mv naught square divided by 2 is equal to 1/2 kx स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √6m/k इंटू v नॉट। ठीक है बेटा, ये गलती देखो आपने इक्वेशन ये लगाई थी, कुछ गलती हो गई होगी। हाँ साइन नहीं लेना बेटा, काइनेटिक एनर्जी है ना, पॉजिटिव होती है हमेशा। ओके, नोट कर लिया आपने ये वाला, ओके गुड एफर्ट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सी there are these two blocks, one block one wedge, right। so मैं थोड़ा इसको पहले वाले को रेज करता हूँ। सो यहाँ पे अभी अपने को क्या दिया हुआ है, this block of mass m, right, it starts sliding at t is equal to 0, yes। so since this block is sliding on a smooth circular cut and also this 2m block is residing on a smooth surface, right। so obviously when this block will move, it is going to, let us say at any position, it will be pressing this block with some normal reaction. Due to this normal reaction, it will be having some component in this direction. So that is why this wedge of 2m, that is going to move in the left hand side. And obviously it is also common sense, if the block of mass m is moving towards right hand side, then the center of mass should not change, right। so 2m has to move on the left hand side, or we can also see by conservation of momentum. Now you can see, so due to this component of normal reaction, this block is going to move in this side, and obviously there will be some normal action on this block also, but बच्चे these normal reactions on both wedge and block will be an internal force, right। and if we see in the y-axis there will be some this 2mg force, there will be on gravitational force on this block, and there will be some normal reaction. So can we conserve momentum in y-axis?
Definitely not, right? But what we can do, we can conserve momentum in x-axis. So the block, when the block will just be about to leave this wedge, let us say the block leaves the wedge with velocity v1, yeah, and this wedge will have some velocity v2, assuming, yeah, block wedge is having some velocity v2 and m leaves with velocity v1 with respect to the wedge, right? So this v1 is with respect to ground as we used to take. So क्योंकि हम जो momentum conserve करेंगे, obviously we will conserve with respect to ground, right? So when the block leads to the wedge, its velocity is v1 with respect to ground, and wedge gains a velocity of v2 with respect to ground. Now initial momentum will be equal to final momentum, but बच्चे ये किस एक्सिस में होगा? Only in x एक्सिस में होगा. So initially ब्लॉक तो रेस्ट पे था, u is equal to 0 से स्टार्ट किया था इसने, ठीक है? तो x एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 0 है. इसका देखो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? m into v1 plus 2m into minus v2. तो m v1 is equal to 2m v2. तो v1 is equal to क्या आ गया? 2v2 आ गया. यहां तक क्लियर है बच्चे? ये बात क्लियर हुई यहां तक? Okay. Now two variables, one equation we already got. How can we find the second equation? Can you tell me? How can we find the second equation? What will be second equation? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया. Yes, very good. So let us take this line as the reference line, right? So initially block is at r height, so it has some potential energy. When the block comes at this point, if we are taking this as reference level, then its final potential energy will become 0, and whole potential energy will be converted into kinetic energy. So second equation will be from energy conservation. So if this is the reference line, so final potential energy is 0, then ब्लॉक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgr. अच्छा, इसका कुछ सेंटर ऑफ मास भी तो होगा, इसकी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, बट वो इनिशियल और फाइनल दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी बोथ साइड्स, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दैट. और दोनों ब्लॉक्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी. फाइनल सिचुएशन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 1/2 mv1², राइट? उसके पास कितनी आ गई? 1/2 2m into v2². और पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल ब्लॉक की कितनी होगी? 0. या सो वी गॉट द सेकंड इक्वेशन. mgr, mm कैंसिल हो जाएगा, सो gr इज इक्वल टू v1²/2 प्लस 2v2²/2. एंड वी ऑलरेडी हैव v1 एंड v2 के बीच में रिलेशन. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. ओके, तो वो अब क्या आती है? v1 इज इक्वल टू √gr/3 सॉल्व करने पे, and v2 comes out to be 2√gr/3. क्लियर है बच्चे? नोट कर लो इसको. डन? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन. द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस वेज 2m इज सफिशिएंटली लार्ज. दैट इज, ऐसा नहीं होगा कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, पूरा नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, राइट? दिस इज सफिशिएंटली लार्ज. सो यू नीड टू फाइंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस.
Yeah, all the surfaces are frictionless. So we need to find the final velocity of both the blocks. Now बच्चों, mind it, this is the final velocity. What will happen? ये ब्लॉक ऊपर आएगा, ठीक है, and this wedge is not fixed, right? ये भी आपको ध्यान रखना है. This wedge is not fixed. तो wedge भी move करेगा. So what will happen when this block M will ascend this block of this wedge of mass 2m? ये इसको इस तरफ push करेगा towards right hand side. Yeah. So when the block will rise on this wedge of 2m, then 2m will also move in the right hand side. And ultimately क्या होगा? हमको पूछा एकदम final velocity. So पहले ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, right? 2m right hand side में चलता रहेगा. फिर क्या होगा बच्चे? फिर ये नीचे आएगा, तब भी ये 2m ब्लॉक को पीछे की तरफ पुश करेगा, राइट? सो अल्टीमेटली ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा. अब जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, फिर 2m पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, m पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, देन दोनों अपनी जो भी वेलोसिटी आ जाएगी उससे मूव करते रहेंगे. सो ऊपर जाके नीचे आने तक, देन इट विल हैव सम वेलोसिटी, राइट? इट विल आल्सो गेन सम वेलोसिटी बाय दैट टाइम, राइट? सो यू नीड टू फाइंड दीज फाइनल वेलोसिटीज. ओके, सॉल्व. अभी सेकंड पार्ट पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए. एक मिनट, नोट कर लिया आपने क्वेश्चन? ओके.
डन। देखो वही चीज आएगी सेम, कुछ भी वेलोसिटीज मान लो फाइनल v1 v2 दोनों ग्राउंड पे होंगे, और मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन। शैल वी सॉल्व, एक बार आप मैच कर लेना, है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे एज ए टोल्ड यू कि दिस ब्लॉक इज गोइंग टू rise on this wedge at the same time. Say let us make some intermediate position, right? So when the block will be on the wedge, it will be compressing the wedge with some normal action. So this normal reaction will be having a horizontal component which will push the wedge in this direction. Now it does not matter whether the block is moving up or it is moving down, right? It will continue to push the wedge due to its normal action in the right hand side. Clear है बेटा? So wedge is going to move in the right hand side. So let us say ultimately block comes down, right? After going up and coming down, block is moving on the ground now, say with velocity v1, and let us assume this gains velocity v2. यही होगा एकदम फाइनल सिचुएशन में. नाउ आफ्टर दैट when the block separates from the wedge, there will be no interaction between these two, and since there is no friction as well, they will continue to move with these velocities. So these will become the final velocities. So since there is no force in x-axis, so we can conserve momentum in x-axis. Clear है बच्चों? Right? So initial momentum देखिए कितना होगा. Initial momentum is m into v naught, right? Final momentum m into minus v1 plus 2m into v2. ये अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएंगे इससे. सो यहाँ पे आ गया v naught is equal to 2v2 minus v1. ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. Second equation will be by energy conservation, since there is no friction force, right? And there is only gravitational force, which is a conservative force, so we can conserve the mechanical energy. Initially kinetic energy block की ये थी, wedge की 0 थी. Finally block is on the ground, so there is no change in potential energy. तो block की kinetic energy half m v1 square plus 1 by 2m into v2 square. ठीक है, तो ये mm आपका 1/2 और mm कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर. क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो v1 स्क्वायर प्लस
2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। तो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से नाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू, राइट। इसको आप एक काम करो, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, v0 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v0 माइनस v1 इंटू v0 प्लस v1 इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। और यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, v0 इज इक्वल टू v0 प्लस v1, ये कितना आ जाएगा, 2v2 आ जाएगा, v0 प्लस v1। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2v2 इंटू v0 माइनस v1 इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। ये कैंसिल 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 कैंसिल, राइट। सो v0 माइनस v1 इज इक्वल टू v2। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो अब इसको ये मान लीजिए इक्वेशन 3, या and this is equation 1. So you can solve now equation 1 and 3 and you will get the values of v1 and v2. हो जाएगा बच्चे? तो v1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2v0/3, देख लेना आप एक बार, ये आ जाएगा आपके पास v0/3, ठीक है। ये समझ में आया? Okay, now let us think about the second part. Maximum height achieved by mass m. What will be the maximum height that this mass m will achieve? You can see what will happen. This mass m will rise, right? So what it will do? It will push the wedge in the right hand side, right? So बच्चों ये बताओ, when the block of mass m, it will keep on going up and up and up. Ultimately, at the maximum height, its velocity will become 0. Yes? Is it okay? Its velocity will become 0 because after that it will start coming down. अच्छा ये बताओ, when the velocity will become 0, this velocity will be 0 with the respect to wedge. Yeah? Obviously, wedge will be moving with respect to ground, but the velocity of this block will become 0 only with respect to wedge. Yeah? And then after that, with respect to wedge, it will start sliding down again. So at the moment when the velocity of the block will become 0 with respect to wedge, at that moment, what will happen? Both the blocks will be moving with same speed in the horizontal direction. Are you getting it? What will happen? ये ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे आ गया, बट अभी मान लीजिए वेज आपका मूव कर रहा है v से, तो ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी तो v से मूव कर रहा होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू वेज इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है ये। क्लियर बेटा? दोनों ब्लॉक्स विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, नाउ सो वी कैन अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन, से इट राइजेस टू हाइट h। या सो व्हाट विल हैपन बाय अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन, 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस 1/2, दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, 3m इंटू v स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल है, वन इज दिस h, अदर इज दिस v, सो 2 वेरिएबल्स। दूसरी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी एंड सेकंड इक्वेशन विल बी फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो इनिशियल मोमेंटम mv0, फाइनल मोमेंटम देखो कितने दोनों का, सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, 3m इंटू v, राइट। सो v0/3 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू भी आ गई v0 के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ h। समझ में आया ये वाला? नोट कर लो। डन? नेक्स्ट, so bachcho we have already studied that if external force on the system is 0, then acceleration of center of mass is also 0. If acceleration of center of mass is 0, then velocity of center of mass remains constant. But what if initial velocity of center of mass is 0? If initial velocity of center of mass is 0, final will also be 0. इसका मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है,
and initially the center of mass is at rest, then it will continue to remain at rest, right? If it continues to remain at rest, then there shall be no displacement of center of mass, that is change in position of center of mass, that will be zero. ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? तो डेल्टा सेंटर ऑफ मास को कैसे लिख सकते हैं? Like we used to write HCOM is equal to m1 x1 plus m2 x2 and so on. Similarly, change in displacement, change in position vector of center of mass can be written as m1 delta s1 plus m2 delta s2 divided by m1 plus m2 0. So if ये वाली जो सारी conditions हैं, if these are applicable, then there will be no change in position of center of mass. Yeah. So this will also be zero, and we can say m1 delta s1. Right? Any distance moved by first particle plus distance moved by second particle plus distance moved by third particle. Vector sum of all these distance will be zero. Right? M1 delta S1, M2 delta S2. Vector sum all these will be zero. Clear? तो इस पे बेस्ड हम दो क्वेश्चंस करेंगे, इसको फटाफट नोट कीजिए. डन. ओके, देखो अभी यहाँ पे since let us solve the next question. Calculate the actual displacement of the student in the plank. So what is happening? This student and plank both are on a rough ground, smooth ground, right? So both are on a smooth ground, and obviously surface between the student and the plank is rough. So calculate actual displacement. Actual displacement means with respect to ground, right? जैसे मान लीजिए one car is moving in backward direction. Say you are standing on a conveyor. Conveyor is moving in the right hand side and you are moving on the left hand side. So effectively आप थोड़ा सा कम चलेंगे, right? जितना आप कन्वेयर पे चलेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आपको आपकी डिस्प्लेसमेंट कम दिखेगी. So they are asking calculate the actual displacement, that is with respect to ground, of the student and the plank. If student stops at the other end, it means he started walking this side, then he comes at this point and stops. तो इसका मतलब बच्चे अगर ये लेंथ L है प्लैंक की, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में वो कितना चला? ऑब्वियसली डिस्टेंस L, बट क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस L चलेगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज व्हेन ही विल मूव इन दिस डायरेक्शन, प्लैंक विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो से अगर वो प्लैंक की लेंथ 10 मीटर है, इफ ही वॉक्स 10 मीटर इन द राइट हैंड साइड, प्लैंक विल ऑल्सो मूव इन द लेफ्ट हैंड साइड बाय सम डिस्टेंस, से इट मूव्स बाय 3 मीटर. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इफेक्टिवली वो कितना चला? 7 मीटर, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, दैट की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नो लेट अस अज्यूम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट चलता है x1 व्हेन ही रीचेस द अदर एंड, एंड इन दैट टाइम प्लैंक मूव्स बाय डिस्टेंस x2. when the student will be walking, there will be some static friction between these two, right? Because we know that while walking friction is static. So friction student पे पीछे, sorry ये हमने डायरेक्शन उल्टी बना दी. Friction on the plank will be in the opposite direction, right? Obviously student पे आगे की तरफ लगेगा because he is moving in the right hand side. So friction student पे आगे लगेगा due to which he will be walking, and equal and opposite force on the plank, it will be in the backward direction, right? But if we consider student and the plank as a system, तो क्या होगा? Student net force, this will be internal force. So in the horizontal direction there is no external force, and we already know
both were at rest. So इसका मतलब center of mass भी initially rest पे था, तो अभी भी ये rest पे रहना चाहिए because horizontal direction में external force 0 है. So horizontal direction में there should be no displacement of center of mass. m1 delta s1 plus m2 delta s2 should be 0. So delta s1 देखो स्टूडेंट का कितना है, हमारे पास x1 है, प्लैंक का कितना है, x2 है. So this will be m1 m into x1 plus capital M into minus x2, which will be equal to 0. So उससे हमारे पास आ गया m x1 is equal to capital M x2. ये क्लियर हो बच्चों? ठीक है, m x1 is equal to capital M x2. Okay, so let me just complete the solution. So what will happen? So when the student completes the distance L, so we have already got one equation. You can see here we have already got one equation, mx1 plus is equal to mx2. Both are the actual displacements of Planck and the ball. But since we have two variables, so we have to find the other equation. So बच्चों, when the student moves by x1, Planck moves by x2. But with respect to Planck, he has covered a distance L. So let us bring the Planck to rest. So we have given displacement to the Planck x2 in this direction, right? So student will also get x2 in this direction. With respect to Planck, distance covered is L, right? So L is equal to x1 plus x2. ये दूसरी equation आ गई. On solving, we will get the value of x1, and similarly, we can also solve for x2. Clear? Note कर लो फटाफट ये. Then we will solve the next problem. Yes, yes, yes. Okay, to solve this question. So a man is standing in a boat. Length of the base of the boat is 5 meter. Mass of the boat is 60 kg. Mass of the man is 40 kg. So calculate the actual displacement of man in boat
if man stops on the other end of the boat. Yeah. So obviously man will walk this side, left hand side, and boat will move right hand side. Then तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मान लेंगे x1, बोर्ड का से x2 है, राइट? आ रहा है अंचल आंसर? Yes, very good. Good. 4x1 is equal to 6x2. x1 आपका 3 आ रहा होगा, है ना? Good, very good. So this is 4x1 is equal to 6x2. तो एंड जब रिलेटिव लिखेंगे तो x1 plus x2 is equal to 5, क्योंकि लेंथ आपकी 5 है, so x1 plus x2 is equal to 5. So these are the two equations from where we can solve for x1 and x2. So x1 will be 3 meter, x2 will be 2 meter. Okay. So this is very important concept. If there is no external force and the center of mass, if it is at rest, then it will continue to remain at rest. If it is moving, then it will continue to move with the same velocity if there is no external force. And it is not necessary if there is no external force in the x-axis, right? So all these things will be conserved in the x-axis. That is, the center of mass is at rest and there is no force in x-axis, then center of mass will not have any displacement in x-axis. And if there is some force in y-axis, it may have some displacement in y-axis, but it won't have in x-axis. Yeah. एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जो आपको घर से करके अभी यू विल सॉल्व, मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 15 टू देख लेना। 15 टू बच्चे एक बार 40 तक ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 टू, इसमें कुछ कंजर्वेशन वाले मोमेंटम के भी होंगे। हाँ, 15 टू 40 तक कर लेना वर्कशीट 1, और वर्कशीट 2 में यू कैन सॉल्व 1 to 15। वर्कशीट 2 यू कैन सॉल्व 1 to 15। ओके, क्लियर? ओके, डन? Okay, then we'll meet again. Thank you.